Good afternoon. Good afternoon, children. So here we again today for the same topic. Incidentally, we are lucky to spare a lot of time if I count today and tomorrow for numerical problem, because the syllabus you might have seen, syllabus still says that we have to continue those topics which more or less I have already covered as far as the teaching is concerned, except power. Okay, if I recall quickly, we did work, we did energy, we also did work for the constant force, and then we did work for the variable force. Okay, and then we went on doing work energy theorem. Somewhere in the middle I told you what is the importance of work energy theorem, and then I talked about energy, particularly kinetic energy and potential energy. I also told you about the sign convention, what we use in solving the numerical problems, which energy are to be taken positive, which work done are to be taken positive, and which to be taken negative. Okay, uh, so it's good. As I told you last time also, okay, this chapter includes a lot of revision of the previous topics. So by virtue of attempting a lot of numericals today and tomorrow, and I hope that you will also ask questions, or you solve questions which I give you. Don't allow me to solve all the questions. Okay. In any case, if I give you a question and you say that's a nahi aata, I will end up solving it. But I feel that that is a little unjustified act from my side. If I give a question and solve myself, so do it. Try to solve it. And in any case, if you're not able to solve, I will solve it. But before I begin, let's complete the remaining part, that is power. Okay, so we'll complete the teaching part here by doing the power. So this is chemistry. Seems like physics. So what is power? Let's be straightforward from the book. What is power? Rate. And how do you write rate? Differentiation के terms में dt upon dt. So dw by dt happens to be power. You can call it's a rate of doing work. Okay. Whenever you get formula, you always give a little thought in the formula, because it gives a lot of physics. Look, what is in numerator? Work. And what is in denominator? Time. And how do you go about? Ratio is more when the numerator is and denominator is? Less. So think in that direction. That means power will be more if more work is delivered in less time. So what is important here? Time as well as work. It's not working? I haven't done anything honestly. So if it is, I have to remove it. Even this is not working. सारा दोबारा बोलना होगा. So if an agency is there which delivers more work in less time, then that agency is more powerful. Is that clear? So lot of work done slowly indicates there is less power. Do a lot of work, okay, but you have completely forgotten about the time you have taken. A lot of length of time you have covered.
So that is going to reduce the power. Okay. Similarly, suppose a very little amount of work you do, very small work, okay, but you have taken very small time in doing that work. So power is also going to be more. Now, if you understand that, it gives a very significant concept. This concept is very similar to the per capita income of a country and the total income of a country. Because the per capita income of the country is actually calculated by dividing the total income by the number of people. So the China and India comes little bottom side on the table. That does not mean that we have less worth. Total worth we have even bigger than the other developed country. But what about the total number of people? They are in any case going to be sitting in the denominator and reducing the ratio. Okay? So if a machine is powerful, if a man is powerful, if an agency is powerful, if a child is powerful, then that machine is going to be delivering a lot of work, all right, but don't forget, in a less time duration. Okay? समझ आ गया? That means unit is going to be, you can say watt or joule per second, such that an animal called horse, we all know, is very powerful, probably more powerful than the other bhai bandhu in the same category. I will not name that. ठीक है, टीचिंग लाइन में थोड़ा वो नाम गलत तरीके से लिया जाता है. ठीक है, बच्चों को भी नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी महान प्राणी है वो. आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे हम किस प्राणी की तरफ इशारा कर रहे हैं. देखने में दोनों सिमिलर होते हैं. काम भी जो दूसरा वाला महान प्राणी है वो कभी कभी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन टाइम बहुत लेता है. इसलिए कभी भी यूनिट आप किताबों में देखेंगे तो उस महान प्राणी के नाम पे यूनिट नहीं बनी, लेकिन हॉर्स के लिए एक यूनिट बनाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट. ठीक है, इज इट ओके? No debate on this number, because probably it should not be subjective to the quality and the type and the country where the horse is found. Okay, we might end up in a very funny debate, because physics doesn't allow us to have such kind of debate where we don't have the. This actually is a calculation merely based on certain observation by few people who made them later on standardized, and everybody is following. Okay, is it okay? 746. Still not working? Voice is not coming, stop teaching. I wish I could transport you people to one of the remote place, and from there then I interact from here, and then you feel about this process, total process, sitting in Delhi and watching the teacher teaching, and then sitting in Mizoram. Okay, so children, if I just move on a little bit more from this formula, I get work as F dot S, and consequently the same formula P, which is dW by dt, can also be written as, got it? If I assume that force is constant, which might not. Chalo, let us first assume that forces are not constant. Then this is going to be this will have a 3 different variable, F, S, and cos theta. Okay? Assuming that one of the
thing is constant, say cos theta is constant, f is constant, I can make this very simple. I can take f out and I can write this ds by dt, which happens to be, so f dot v is power. But don't forget that this is conditional. Okay? Otherwise, if f is not constant, then we have to apply that product rule. First function into differentiation of second plus second into differentiation of first. Okay, is it okay? So now we can solve the problems based on work against constant force, against variable force, work energy theorem, where we talk about work on one hand and kinetic energy change on the other hand, as if we are totally in ignorance about the potential energy. Such a wonderful theorem where we have to just learn how to use it, that's it. Okay, the child doesn't know about potential energy, hardly has any problem in solving the different physics numericals on the basis of work energy theorem. Then in some other case we might have to solve the problems based on power. So let's begin. Chalo. Let's start. Let's start with a simple problem. Question 1. Okay, there's a diagram here, and this diagram has got a system where two masses and they are connected by two pulleys. Both the pulleys are light, P1 and P2 are light. Can someone tell me what is the meaning of light pulley? Frictionless, and therefore tension across the pulley will be constant. Okay. Got it? Question is, find the velocity let's take mu also 0.5. Find the velocity of mass m. Find the velocity of mass m when mass 2m. Find the velocity of mass m when mass 2m falls down, say by an amount 10 meter, by an amount 10 meter. Okay, this is the question. Let's don't solve it. Have 5 minutes cool-minded debate on it. You'll get some real context-based merits of work energy theorem on those topics which we have learned in laws of motion, where we have been taught, you have been taught finding the tension, acceleration and equations of motion, free body diagram, etc. I'm not writing against those concepts. जब कभी question आएगा उसको apply करेंगे, ऐसी बात नहीं है. But when there is a talk of velocity and it is clearly evident from the problem that work energy theorem can do, then I think that we should be smart enough to forget about the laws of motion. You can save almost 50% time, priceless time of your examination. Okay?
तो पहले उस पे डिस्कस करते हैं. अगर हम उससे करते तो क्या करते हैं, टेंशन निकालते, क्योंकि वेलोसिटी पूछना, वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी कैसे निकलेगी, फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड, वेलोसिटी की पूछने पर काइनेमेटिक्स पढ़ के यहां तक आए हो कि v इक्वल टू यू प्लस एटी से, या v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस. ऑब्वियसली यही से इक्वेशंस है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन वेयर देयर इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन. Some acceleration would be here, some acceleration would be here. The system is going to follow some acceleration, and if there is an acceleration, anybody finding the velocity has a very straight away path that v is equal either u plus at or v square is equal to u square plus twice as. S भी given incidentally, v आ गया. बट इसके लिए क्या क्या करना होगा, इक्वेशंस बनाना होगा, a निकालना होगा, ठीक है. थोड़ा टाइम लगेगा. एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है ये. We have to just apply work energy theorem. सिर्फ एक लाइन, अगली लाइन में आंसर. One line you have to write the work energy theorem wet, and the next line is the answer. But that is what I want all of you should learn and become master in doing that. ठीक है. सोचना क्या होता है फिर से बता देता हूं. We have to think that what are the forces which are involved in the process, because work energy theorem says that work done by all the forces. तो बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह सोच रहा हूं, ठीक है. I will think about all the forces and the work done by them. I will be careful about the positive and negative work done. वो तो होना ही है, ठीक है. साइन कन्वेंशन पढ़ा किस लिए था. And then that is equal to always change in kinetic energy. That's it. ठीक है. Is it okay? So now tell me which are the forces which are doing work here? Yeah, against which the work is being done. Frictional force, one, fine. Gravitational force, ठीक है, clear है. Tension, no, big no. Why? Because tension happens to be internal force. It always exists in pair, and that pair also God gifted pair इस तरह से होता है कि one direction is always opposite to the other. No question of finding the work done by tension. और तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है. फ्रिक्शन ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया. सो वर्क डन निकालते हैं इन दोनों का अगेंस्ट, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लेट्स डू. शुड आई लीव यू नाउ या शुड आई सॉल्व? करोगे या मैं करूं? एक कर दूं, चलो हमारे साथ करो. वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ. फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट. This is given that this falls down by how much distance? In that time, this will go right how much distance? Raise your hand those who know the answer. अगर ये 10 मीटर नीचे जाएगा तो ये कितना आएगा राइट? पहले बताओ, राइट आएगा कि लेफ्ट जाएगा? ये कितना आएगा? नहीं. मैम ये आज कुछ कह रहा है. 20 आएगा ना? देख लो, 5 आंसर 20 आंसर, दोनों आंसर. लॉजिक तय था कांस्टेंट रिलेशन. ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो अगर तो कांस्टेंट रिलेशन अप्लाई कर लिया करो. व्हाट इज द कांस्टेंट रिलेशन? सेज वर्चुअल वर्क इज 0. दैट मीन्स टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट 0 होगा. टेंशन, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, टेंशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट 0 होगा. एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, टेंशन और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट 0 होगा. बड़ा सिंपल. यहां पर टेंशन क्या है? 2t. यहां क्या है? t. अगर इसका x1 है, इसका x2 है, तो यहां का वर्क डन क्या होगा? t1 इंटू x1. यहां का क्या होगा? x2. ठीक है, t2 कितना है? 2t. t से t कैंसिल, x1 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट किया, एक बार और किया. ठीक है, सो फ्रिक्शन इनटू 20 प्लस या माइनस? फ्रिक्शन ऑलवेज डज नेगेटिव वर्क. ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी. वेयर इज द ग्रेविटी डूइंग वर्क? हियर और देयर और बोथ प्लेसेस? व्हाई नॉट हियर? रेस्ट तो नहीं कर रहा है. रेस्ट कहां कर? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है. ठीक है, रेस्ट नहीं कर रहा. और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्रेविटी डजंट डू एनी वर्क, क्योंकि हाइट तो सेम रह गया. ठीक है, सो हाउ मच इट हैज गॉन डाउन?
सो प्लस या माइनस, ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क? पॉजिटिव. प्लस ट्वाइस एम जी एच is equal to change in kinetic energy. I am writing work done is equal to delta KE, and what is this called? WET, work energy theorem. Note kar lena. So come on now, change in kinetic energy. When we started, what was the velocity? 0. At the time when this is moving with, किसका निकालना है? किसकी वेलोसिटी निकालनी है? इसकी या इसकी? m की. मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v/2, ठीक है? अब कहोगे सर इसको v मान लो, तो इसके कितनी हो जाती? 4 ऑप्शन में से आपसे एक गलती हो जाती. फिर जल्दी होता है, टाइम तो होता नहीं आपके पास, क्योंकि 4 ऑप्शन में v वाला ऑप्शन चूज कर. अब जब आप इसको v मानोगे, क्वेश्चन में किसका v निकालने को पूछा है? इसका. बच्चे ने गलती से इसको v मान लिया, उसका आ गया 40, और एक ऑप्शन और था वहां पर 20. जल्दी में वो कौन सा टिक करके आएगा? 40 वाला, जबकि ऑप्शन कौन सा सही है? 20 वाला, क्योंकि आपने इसको v माना था, जबकि 2v आंसर होना. इस तरह से गलती हो जाती है. इसलिए देख लिया करो कि किसकी वेलोसिटी निकालनी है, किसके, उसके हिसाब से अज्यूम. इसको अगर मैं v मान लूं तो इसका कितना होगा? v/2. सो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? इसकी चेंज कितनी हुई? हाफ 2m v/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अच्छा, प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, ठीक है? इज इट ओके? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ इंटू मास इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर. हाउ मच इज दिस? 2 से 2 कैंसिल कर दो. m v स्क्वायर बाई 4 प्लस m v स्क्वायर बाई 2. दिस इज हाउ मच? 3/4 m v स्क्वायर, ठीक है? इज इट ओके? -0 तो छोड़ दो, एलएचएस में आ जाओ. माइनस फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा? फ्रिक्शन म्यू टाइम्स, बोलो, m नॉर्मल रिएक्शन. कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन यहां पर? mg. सो म्यू टाइम्स mg इंटू 20, ठीक है, प्लस 20 mg. m से m कैंसिल, ठीक है? म्यू कितना दिया है? 0.5. सो माइनस 0.5 इंटू 20g. 20g को 10 ले लूं, ठीक है, प्लस 20g अगेन 200 इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर. ये कितना हो गया? 300 नहीं, 200 माइनस 100, सॉरी 100. दिस इज गोइंग टू बी 100 ना? 100 प्लस माइनस 100 प्लस 200, that is 100 is equal to 3/4 v square, and therefore v square is 400 by 3, and therefore v is 20 by root 3 meter per second. ठीक है? पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. क्वेश्चंस आगे और दूंगा भी करने को, कि द वर्क एनर्जी थ्योरम जस्ट रिड्यूसेस आवर एफर्ट if we use it cautiously, if we just be careful little bit about the total work done and the sign convention. Only 2 things. ठीक है? Can we do one more work? One more question? This time yours. Any online questions? Sir, explain this question again. Why can't work done by a frictional force be positive? पहले तो मैं नीचे वाला आंसर दे देता हूँ, हाँ? मिस्टर JK राम टेक के जो भी हैं, and that is
frictional force always does work in opposite direction. The reason is that there is an angle between the displacement and the force of friction 180 degrees, sir. And that means when you break it, force into displacement into cos 180, cos 180 happens to be minus 1. So the friction always does negative work. And the question explaining again is something which I am going to do, no problem. But in the meantime, let me engage you. How to engage you? I can give you another question here. Okay, all of you try this question. There's a situation, children, here, and there is sphere of radius r, which is fixed. It is not moving. This sphere is fixed. And there is a mass m right at the top of this sphere. Okay? Somebody from you only gives a gentle push to this mass, tuck, and this mass starts sliding down, moving down. Okay? You have to find the velocity of the mass when it just leaves the sphere. Question है, find the velocity of the mass when it just leaves the sphere. Velocity of the mass when it just leaves the sphere. Find the velocity of m when it just leaves the sphere. Any doubt? There is no friction. For your help, there is no friction. So friction is 0. ये आप कर रहे हो, ठीक है? ये मैं समझा रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों को जिनको एक बार समझ में नहीं आया. आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? फिर अपना काम करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी. The question is, there is a mass m and there is another mass 2m. They are connected by means of a thread and two pulleys. Both the pulleys are light. System is allowed to fall under gravity. There is a coefficient of friction between this surface and this mass, which is given as 0.5. The question is, find the velocity of this mass m when the another mass 2m falls down by a distance 10 meter. Find the velocity of mass m when mass 2m falls down by 10 meter. This is the question. So what I did, I am going to repeat again. I will solve it again. I first told that if the velocity of this mass is suppose v,
then velocity of the other mass 2m would be 2v. Please refer to my previous classes how it becomes v and 2v. So if the velocity is v, this will be 2v. Fine. Similarly, if this has fallen a distance of 10 meter, then this will go right a distance of 20 meter. Keeping these two things in mind, I can now write work energy theorem and solve this question. As far as work energy theorem is concerned, wet work done is always equal to delta K, that is change in kinetic energy, work done by all forces, I told in my previous class. So there are two work done by two forces only, friction and gravity. Work done by friction will be frictional force into displacement, which is S dash. Work done by gravity will be, this is going down, so twice mg into, as I told, this is going down by 10 meter, so displacement is 10, which is equal to change in kinetic energy, and consequently we can write this as minus mu times mg into 20 plus 20 mg is equal to delta Ke, that means 0.5 into 20 mg plus 20 mg is equal to delta Ke. Delta Ke will be written as half m. Acha, this is not to v, sorry, this is v by 2. That was a mistake. Half m v by 2 chi square plus half 2m into v by 2 chi square plus half m into v square. Okay, if you solve, on solving you get v as 20 by root 3 meter per second. Yes, children, where have you? If a body is standing on the floor of a bus and bus moves 1 kilometer with a constant speed in a straight line, what is the work done by friction on the buoy? Zero, because the buoy is not slipping. Okay, sir, if you can hear me, then since the buoy is not slipping on the surface, therefore friction doesn't do work. Friction does do work only when there is a sliding on a surface and there is a displacement. So in that example, work done by friction is 0. What about the kinetic energy if the work done is negative? If the work is in negative, then the change in kinetic energy will also be negative, because negative LHS, negative RHS, that only can be solved. V square can never be negative. I have replied. जो पूछ रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा at least. Answer आ गया? 2 root 10. How many of you are getting 2 root 10? Raise your hands. एक टेबल पूरा ही गायब है. We are having table wise answer today. क्या हुआ? What happened? They all might be wrong also, so don't be disappointed. I mean, might be correct also. उनको मोटिवेट करने का तरीका है. आप तो पहले से मोटिवेटेड हो करके बैठे हो. So let's see whether they have done this right or wrong. Can I ask one girl, smart girl coming and doing it? जिसने कर लिया हो, confident. Is there anybody? आ जाओ. Me or you or she
For me, I need a smart girl coming over here and doing it. Smart means power, work done in less time is the meaning of smart physics के एंगल से. ठीक है, हम वो फैशन शो में नहीं बैठे. तो smart means come quickly and do it. That is the meaning of smart. And then we all are going to watch. ठीक है, अगर गलती हुई तो पकड़ना जरूर, क्योंकि हाँ और क्या. One is you, other is we. करने दो अभी से लगी फुसफुसाने. आप लोग कर क्यों नहीं पाए? हाँ? अच्छा, उसमें डाउट था तो आप करो. हाँ लगेगा, बट सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क करता है कि नहीं करता? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मतलब यू आर लर्निंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क करता है कि नहीं करता. आवाज आ रही नहीं करता. वेयर इज दैट साउंड कमिंग? किसने बोला? अब सबने मुंडी नीचे कर ली. डिवाइडेड. हाँ सही बोला, सही बोला, वर्क नहीं करता. तो अब किसने बोला? अब तो बताओ. अभी भी नहीं. रीजन इज why it doesn't do any work? Because centripetal force happens to be always perpendicular to the displacement, because force happens to be either inward or outward, centripetal, centrifugal, and displacement happens to be on the circumference. And what is the angle between them? 90 degree. So it never does any work. Good learning. Centripetal force like tension doesn't do any work. देखें रुको एक मिनट. And work done here is mg. Work done is by gravity, na? So how much is work done? No, mg is the force. Mg cannot be work done. Work done is always force into displacement. Displacement. What is the displacement? 2r. आपने डिस्प्लेसमेंट तो सोचा नहीं, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है कि वो साथ कहां छोड़ेगा स्फेयर का. ये कभी नहीं होगा कि ये ऐसे चलते चलते आए और यहां साथ छोड़े. इधर ही कहीं छोड़ देगा. तो हमें ये नहीं पता कि साथ कहां छोड़ेगा. जब तक ये नहीं पता कि साथ कहां छोड़ेगा उसका, तब तक डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? अगर 2r कहती हो तो इसलिए गलत है क्योंकि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये चलते चलते चिपक के स्फेयर के साथ यहां तक आएगा, फिर बोलेगा चलते भाई फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना. ठीक है, ये तो कोई नहीं मानेगा ये फिजिक्स में तो बिल्कुल. क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि ये इधर तक आ जाए फिर साथ छोड़े? ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट था, बिल्कुल मैग्नेटिक, जिस भूत प्रेत वाली बात हो गई है. यहां तक आया फिर अचानक से साथ छोड़ दिया, ये नहीं हो सकता. फिर ये यहां कहीं छोड़ेगा. अब नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहां छोड़ेगा? अच्छा मान लो कहीं आपको नहीं पता कहां छोड़ेगा, लेकिन कौन सी वो फिजिक्स है जो आपको पता लगाने में हेल्प कर सकती है कि कहां छोड़ेगा, जहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है. हमें यही सीखना है बच्चों. हमें हर स्टेप्स को जो हमने सीखा है उसको रिस्पेक्ट करना है. ठीक है, नई चीज सीखते ही पुरानी नहीं भूल जानी है, उसको रिस्पेक्ट करना है. नॉर्मल रिएक्शन जीरो अगर आप कहते हो, इसका मतलब आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिस इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन मौजूद हो, तभी तो जीरो करोगे. So you people have to be careful when if you say the contact is being left out, you make an equation now which involve and then make normal reaction zero. You might get a clue. At least better रहने से तो बेहतर ही है. ठीक है, so the solution is unfortunately wrong, but I appreciate your effort. Okay, good, no problem. Next time you will get the right answer. So अच्छा, second one thing which I also wanted to point, what is her name? Shivani. This always write final minus initial. Okay,
Final kinetic energy minus initial kinetic. Change is always final minus initial. Why it is that important? Because अभी एक क्वेश्चन आया था ऑनलाइन कि what if the LHS is negative? तो कहीं लास्ट में चल के v स्क्वायर आपका नेगेटिव ना आ जाए, फिर मैथ्स वालों ने बोल रखा है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटीज आयोटा, फिर आप कहोगे ये तो वेलोसिटी आयोटा आ गई यार, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है. वेलोसिटी कैन नॉट बी इमेजिनरी, so that is very important. Final minus initial change in kinetic energy. Let's do, पहले इक्वेशंस बनाते हैं, आ जाओ. चलो मान लो मैं थीटा एंगल पे आ गया यहां, ठीक है. सपोज आई एम एट एंगल थीटा. टेल मी द फोर्सेस. नॉर्मल रिएक्शन mg, सर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है? देन रिजॉल्व करो, ये mg cos थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, दिस वुड बी mg sin थीटा, mg cos theta. Fine. Anything else? Friction is not there. Okay. So I can write mg cos theta minus n is equal to mv square by r. Got it? अभी करेंगे, ठीक है. हमें मुझे थीटा, is it okay? mg cos theta minus n equal to mv square by r. Have I written this from NIF or from if? Because I have not represented the centrifugal force, ठीक है, and therefore I am totally from if. Fine. If n0, then बोलो mg cos theta is mv square by r, and therefore v square is gr cos theta. Equation 1. ठीक है, यहां तक ठीक है बिल्कुल. We have to move on to make another equation. Why? Because there are two variables here, v and theta, and one equation is not sufficient. Let's try to find out the one equation by using weight. Work done is equal to change in kinetic energy. ठीक है, weight लगाए. So by weight, सोचो मेरे तरह जैसे मैं सोच रहा हूं, कौन कौन से फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं, और कोई, ठीक है. अब ग्रेविटेशन वो वर्क कर रहा है, पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव? वेरी गुड. ग्रेविटेशनल का अमूमन नॉर्मली वर्क क्या होता है? mgh. mgh, यहां पर h क्या है? हाइट, जितना ये फॉल किया, ये है h. कभी मत घबराओ किसी नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है, क्योंकि वो आपको लगता होगा वेरिएबल, आगे चल के वो सॉल्व हो जाता है, तो आपको कि सर एच बी नोन नहीं है तो कोई बात नहीं, एच को निकालेंगे थीटा के टर्म में भी. फाइन, आगे बढ़े. mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस ठीक है. इज इट ओके? इसका जरा चश्मा लगा के देखते हैं इस छोटे से डायग्राम को, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ये है h, ये थीटा है, ठीक है. इज इट ओके? ये r है, ये पूरा भी r है, ठीक है. इज इट ओके? ये जो होगा ये r cos थीटा होगा, दैट मीन्स h क्या आ गया? r माइनस. वेरी गुड. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m g r 1 माइनस इज इक्वल टू हाफ m कैंसिल, ठीक है. Okay children,
So what we get? बताओ GR 1 minus cos theta is equal to V square. 2 आएगा 2 GR is equal to V square. Equation 2. I'm in full confidence that any Tom, Dick and Harry can solve it because 2 variable 2 equations. Still I will try with you. Come on. यहाँ से V square क्या आया था? रख दो इक्वेशन 2 में. राइट हैंड साइड में रखो GR cos थीटा. अब बताओ कितना आया? क्या क्या कैंसिल हुआ? कैंसिल करो. 2GR 1 minus cos theta from equation 1 and 2 is equal to GR cos theta. GR cancel. 2 is equal to 3 cos theta. I guess I'm right. 2 is equal to 3 cos theta. And therefore, what is cos theta? This could be another question, children, in your exam. आज नहीं पूछा मैंने तो क्या हुआ? But this could be another question. Find the value of theta at which the body leaves the sphere. ठीक है, cos inverse 2/3. Anyway, इसको उठा कर रखो, रिजल्ट को फर्स्ट में डाल दो. That was GR cos theta is equal to V square. So 2/3 GR is equal to V square, and therefore V is equal to ठीक है. मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपके साथ जब आपको लगे कि ये तो ऐसे हो गया. तो जब कभी आपका आंसर कभी ऐसे आए तो थोड़ा सोच लिया करो कि समवेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. तो दैट्स गुड, यू नो, गुड हैबिट कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है. गॉट इट? ऑनलाइन क्वेश्चन. एक्सप्लेन इक्वेशन 1 अगेन. इक्वेशन 1 तो हमने मिटा भी दिया. इक्वेशन 1 बट मुझे याद है. if sir or whatever student whatever, if you have that diagram, I remember that equation mg cos theta minus n is equal to mv square by r. And how do we write this? We normally say that net force towards the center is equal to centripetal force, which we have done in circular motion. So what is the net force towards the center? Sir, it is mg cos theta minus n, because n happens to be outward force and mg cos theta happens to be inward force. This is n and this is mg cos theta. Any other question? ठीक है. One more question. there is a almirah outside. उधर वो कुछ अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं वहाँ पर. एक उसमें से एच.सी. वर्मा करके बुक है. हाँ, आप में से किसी के पास है क्या? है? नहीं, नहीं यहाँ नहीं है, वहाँ है, लेकिन आप निकाल लो. Let's do another question. Okay. There's a ring, okay, and there is a mass m which has been fitted with the hook. I gave you last time, I think, when I gave you the assignment. I don't know whether have you got it or not. It is allowed to fall from a height h under gravity. Incidentally, it stuck into the ring, and then
After it stucks into the ring, it makes a complete circle. Question is, इतना तक अभी तक हमारे साथ हो ना? साथ तो नहीं छोड़ा किसी ने? Yes sir, छोड़ दिया? Okay. There is a ring. Okay. Have you seen those gymnasts performing astonishing act? Gymnast, they just leave and then hold the rod and again round, and they do so many things. I'm sorry, I can't do. I might terribly end up doing something very funny, but the question, they just, this mass and this rod is allowed to fall under gravity. Okay, one thing which you all must be very certain, if I fall this pin like this under gravity, it will remain like this throughout the journey. It never tilts itself. If I allow to fall like this, it will remain like this. It will tilt itself only on striking the surface. जैसे तुम छोड़ोगे वैसे गिरेगा. It's very simple. Guarantee. You know why? Because under gravity, when something falls, the weight is 0. Okay? There's nothing to tilt it. There's no torque. Fine? Is it okay? So, maximum damage is done जब कोई नीचे कूदता है, when he or she strikes the ground. उसके पहले अगर बचाना चाहो तो आप आराम से बचा सकते हो उसे. ठीक है? So if suppose this falls like this, it will stuck here, straight only, and then questions की तो झड़ी लगा दे रहे हैं. Okay, I will come to each and every questions. I request you all first listen this question and then I will come. मैम इसको रहने दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? So this stucks into the ring and then just like gymnast, it goes around. Okay, stuck हो गया, ring can rotate. So this just goes round and it just reaches again. यहाँ से शुरू करता है, पहले bottom आएगा and then it reaches again at the top. That means one cycle complete कर लेता है ये. यहाँ से start हुआ and then it completes सर्किल. इसके आगे भी आएगा, अगर वन कंप्लीट कर लिया तो वहां रुकेगा नहीं. इट विल ऑल्सो कम, मतलब मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, इट गोज अराउंड एंड कंप्लीट्स वन सर्किल. बट द क्वेश्चन इज, इफ दिस लेंथ इज एल, फ्रॉम विच हाइट वन शुड फॉल दिस पर्टिकुलर सिस्टम सो दैट इट कंप्लीट्स वन सर्किल. दिस द क्वेश्चन. ठीक है, तो डायग्राम बना लो और क्वेश्चन लिख लो. फाइंड द हाइट h from where the system falls to complete one circle. This is the question. Should I explain again? Should I explain again? There's a ring, there's a mass, the mass is attached with the hook and the mass together falls, it incidentally is stuck into the ring and then it goes one round. Okay? You have to tell the height from which you allow the system to fall so that it makes one complete circle. Now questions. The mass on the circle is experiencing how high, how? No, it's a how. How many forces exactly? When there is friction also. When there is friction also, then naturally frictional force will be in addition. When there is a friction also, then there is a frictional force in addition to the whatever I have shown in the diagram, sir. That's it. Then Mr. S.P. Das, from where R1 minus cos theta came. Did I tell you from where R1 minus cos theta आया था उसमें? बताया था ना? अच्छा, yes. That came because we took R common and height h we calculated by diagram R minus R cos theta. Okay, fine. And then from तो हो गया. Then Rajesh Awasthi sir, repeat question number 3. मुझे नहीं पता 3 कौन सा है. यही है 3? हाँ, ये तो मैं repeat करूँगा ये अभी. कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन सारे रटे हुए हैं. मैं तो सिर्फ डेटा इसलिए चाह रहा था कि थोड़ा बच्चों को आंसर भी. कोई बात नहीं.
The question is, there is a ring, there is a mass, mass is attached with a light rod, rod is having no mass, it's a massless rod, and there is a hook, the hook incidentally fits into the ring, and then the mass goes round because this is fixed. You have to calculate the height h in terms of L so that the mass m makes one complete circle. Is the question. आप ले लो 5, 10, 15 मिनट जितना ले लो, बट प्लीज आप सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम के एंगल से सोचना. डेलिबरेटली क्वेश्चन दिया हूं, होगा ये एक लाइन में, अभी भी गारंटी लेता हूं मैं, एक लाइन में सॉल्व होगा ये, बट वेट सोचो. वर्क एनर्जी थ्योरम. ये पूरा ऐसे आ जाएगा ना, जैसे ऐसे ये रिंग है, ऐसे आया टक, रिंग वहीं रहेगा, ये ऐसे घूम जाएगा पूरा. हाँ, फंस जाएगा रिंग में. स्टक्स का मतलब फंसना ही होता है. डजंट मैटर, साइज ऑफ द रिंग डजंट मैटर, नेग्लिजिबल. जस्ट इट स्टक्स इनटू द रिंग एंड देन मूव्स. Mass of the ring negligible and radius of the ring is also negligible. बच्चे, क्या नाम है आपका? ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे पूरा करो? नहीं करते ऐसी गलती, क्योंकि उसमें दो मीनिंग हो गई ना आपके हिसाब से. ओनली रूट ऑफ 2/3 GR आउट ऑफ रूट, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था. ठीक है, क्या बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम. बट एच क्या लिया? अच्छा, ठीक है, ठीक है. तो अच्छा वी निकालना है, तो दो इक्वेशन बन गए. दैट मीन्स यू हैव टू थिंक ऑफ वन मोर इक्वेशन. यहाँ तक तो ठीक है. हाँ, लेकिन ये तुम्हारी वेलोसिटी आई है, ये तब आई है जब ये फंस गया रिंग में, अटक गया. नीचे तक नहीं तुमने सोचा, क्योंकि नीचे तक सोचती तो L+H लेती. I hope. तो अब वो तुम्हें अकाउंट, you have to account for that also. Only gravitational force is doing work. क्योंकि उसकी जो रॉड है उसकी लेंथ L है. L है ना, तो ये H+L हो गया यहाँ पे, और जब ये वापस यहाँ पे जाएगा सर्कल कंप्लीट करके, तो दोबारा H+L पर नेगेटिव में, क्योंकि नहीं, मुझे तो समझ में आता नहीं कुछ. मैंने जो बोला दूसरी बार इंसल्ट किया इसने मेरी. नहीं, point is I have understood what you said, but you will be surprised to know that this H+L के चक्कर में तुम खुद ही एक गलती कर बैठी हो. अब मैं पूछता हूँ, तुम्हें समझ में आया? गलती हो गई आपसे, क्योंकि आपने, if you have allowed the rod to fall from H, say, okay, before stucking into the ring, how much height the rod will fall? H. After stucking into the ring, how much further height it will go down? L. इतना तक समझ में आ गया? Begin from the bottom now. How much it will come before getting again parallel position? L. तो L का तो मैं negate करना मान गया, जितना L नीचे गया. What about अब जब when it goes like this,
How much height it has further gone? L, not H. L. क्योंकि रॉड ही तो लेके जा रहा है. नाउ हाउ कैन यू अज्यूम H इज मोर देन L और L इज मोर देन H, बिकॉज ये तो दिया ही नहीं है. तो इफ, सुनो ध्यान से, इफ H इज मोर देन L, इफ, तो जहां से आपने ड्रॉप किया था उसके पहले नीचे रुकेगा जाके. बट इफ रिवर्स, यू नेवर नो. दोनों केसेस, एंड आई विल टेल यू सरप्राइजिंगली, इररिस्पेक्टिव ऑफ बोथ द ऑप्शंस पॉसिबल, आंसर रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस. ऐसा क्वेश्चन है ये. Whether a child assume that H is more than L or L is more than H, answer will remain same. That's the beauty of work energy theorem. हाँ मत करो, वो तो मैं इनको इसलिए समझा रहा था क्योंकि इन्होंने कंसीडर किया था. इनके हिसाब से नेचुरली वो आया तो नीचे, जितना नीचे आया उतना निगेट भी कर रहा है, ये कहना चाह रहे थे. तो निगेट कितना कर रहा है, he was thinking from that line. मत करो कंसीडर, कुछ और कंसीडर कर लो. आई विल बी वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी ऑल्सो. करो तो सही. एक राजेश अवस्थी सर का आंसर आया हुआ है. H इज इक्वल टू R, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल. पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है. अच्छा इज, आज तो बहुत इंसल्ट हो रही है. यस, इट इज नॉट गिवन. इट इज नॉट गिवन सर. इट इज नॉट गिवन वेदर H इज इक्वल टू R. बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट. और ये मिसेस कुसुम मल्होत्रा, V2/2a, ये क्या है? आंसर है? नहीं, आंसर ये कैसे हो सकता है? आंसर तो H के टर्म, आंसर तो H को L के टर्म में आएगा. नहीं मैम, ये कुछ अलग से ही पूछ लिया आपने, सॉरी. हाँ L के टर्म में आएगा आंसर. बताओ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आज आप एनर्जी इकट्ठा करके आए हो बहुत दिन बाद. आज आप बता के ही रहोगे. हाँ मुझे आ गया था समझ में. नहीं अरे कम ऑन यार, वी आर लर्निंग समथिंग. इसमें इंसल्ट उनसल्ट कुछ नहीं होता. तो हंसा रहा था मैं आपको. आगे आंसर सोच लिया? कंफ्यूजन हो गया? दो वेरिएबल, दो इक्वेशन. If you are having problem in this question, you honestly are not following the basics which I taught you about work energy theorem. So please go back again and follow the basics, work energy theorem. Nothing else you are doing wrong. I'm absolutely fine. You must be doing everything correct, but only thing we are doing wrong here is the work energy theorem के जो basics थे वो आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया. दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करो.
बेटा बोल. अगर हम डी और बी पॉइंट में से किसी का देखें तो उसकी वेलोसिटी √3 g होती है. अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है. तो हम वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे. हमें यहाँ की जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हमें पता है क्या है, और बस h तो हमें है ही, तो h ही हमें निकालना है. mgh इक्वल टू, करो, करके देखो. सही है. हाँ सही, अभी तक तो बिल्कुल लॉजिक सही है. एल प्लस एच, तो एच एस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड और एल इक्वल टू 0 आ गया. तो तुमने एक बहुत परिश्रम से, हाँ एक बहुत परिश्रम से तुमने एक प्लान बनाया, बहुत मेहनत से, कि चलो आज ठंड ज़्यादा है, रजाई में ही रहते हैं, पूरा दिन बिताते हैं. इतना परिश्रम करने की जरूरत थी नहीं. वो तो बहुत आराम से प्लान बन सकता था. इतना मेहनत करने की आवश्यकता थी नहीं. हाँ, which is wrong answer. Which is wrong answer. Should I do? Okay, anybody has done online? अभी तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना ही. अच्छा, क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करके आंसर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं. There is a ring. I'm really very interested to get a ring and an umbrella, because umbrella has a similar hook, and if I fall the umbrella, that hook of the umbrella which I'm talking about, handle, that is stuck into the ring and it goes round. You can do at home, jaake kar lena. So there is a ring, there is a mass, there is a rod has a length L, there is a hook, they are allowed to fall under gravity. Incidentally, it is stuck into the ring and goes round. We have to find h so that, in terms of L, so that it makes one complete circle. Children, let's do it by using only work energy theorem, which says there is no harm to repeat it. Agar itna important hai to there is no harm to repeat it. Which says bolo, by all the forces change in kinetic energy. How many forces are doing work here? Only gravity. How much gravity has done work? That is a serious question. No, that is wrong answer. Think of, why mgh? It could have been mgh if this could have fallen down and from here, then h, and then stopped here. Then mgh could have been the right answer. But it's not stopping here. It's going down. It is not only going down, it's coming up also. So why don't you think in totality? mgh minus mgl, assuming h is more than L. mgh minus, so write it mgh minus L. ठीक है, इसको लिखते समय आपने ये अज्यूम कर लिया कि अगर ये h है, ये L है, ये यहां आके रुका. दैट मीन्स ये कितना हो गया बताओ? ये टोटल L है. एक केस ये भी हो सकता है और एक केस ये हो सकता है जो आपने लिखा यहां पर. ठीक है, फर्क क्या आएगा उस केस में और इस केस में? ये h माइनस एल है, वो L माइनस एच हो जाएगा. इक्वल टू क्या होगा ये बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हाट वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू स्टार्टेड? 0. What you are expecting at the final position? What will be the kinetic energy when it reaches at the top? So did it stop there? Acha, so did it continue? Then what velocity? If it continues, then with what velocity it should continue? 5gl at the bottom, 5gl never at the top. Under gl at the top. Now you actually got 2-3 knowledge
and you started mixing them together. जब मैंने ये पढ़ाया था root 2gl, root gl और root 5gl, I took a thread. It was not a rod. Number one, there is no question of rod getting slack. There is always a question of thread becoming slack. There is always a case of thread becoming slack means tension being 0. There is no question of rod becoming slack and tension in the rod being 0. फिजिक्स में अगर हम ऐसी बातें करने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे. That means वो जो रूट GL है, रूट 3GR है, आंसर गलत क्यों आया बता रहा हूँ. वो रूट जो 5GR है वो एक नॉलेज है, थैंक यू वेरी मच, बट डोंट अप्लाई दिस एवरीवेयर. It is a case of a rod which remains L whether it's here or here, or even if there is a topmost position, length of the rod is going to be same. There is no question of slacking, and therefore if we make the rod reach at the top, suppose we make the rod reach right at the top and with 0 velocity, I can still guarantee you that it is bound to come down. अब कहोगे sir, if it is at rest then how does it come down? ज्यादा जोर लगाओगे, ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो बोलूंगा ठीक है बेटा तू सही बोल रही है. Let it reach the top with negligibly small velocity. उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं, ठीक है. negligibly small कितना हो सकता है? As small as you can think. उसको अकाउंट ही नहीं करूंगा मैं कैलकुलेशन में. So that's why it's good enough to say that let the rod reaches at the top with 0 velocity and is still saying that it is bound to come down. ठीक है? Is it okay? Now tell me what is the kinetic energy, change in kinetic energy? फिर से half हमेशा started with 0 kinetic energy and ending at, so what is the change in kinetic energy? So what is the answer? This is what the beauty of work energy theorem. Only thing if you understand to apply, that's it. You need not to do anything else. The answer is H equal to L. It started from here. ये तो आप मान रहे हो ना, started from here. मान लो ये H है, ठीक है. It stucks here. ये L है मान लो. It goes down. बहुत बड़ा ले लेता हूं L. And then it comes up also. यहां कहीं आके रुकेगा. So what is the height it has gone? L minus H. बहुत छोटा ले लो L. तो यहां कहीं आके रुकेगा. But H minus L हो चाहे L minus H हो, आंसर क्या आएगा? H equal to L. ठीक है? नहीं यार समझ में, बतियाते रहोगे तब समझ में कैम आएगा. सोच लिया? मुझे भी बताओ कहाँ गलती की. अच्छा फिर तुम उसको लेकर देन यू आर एक्चुअली गोइंग राइट एट द बॉटम. सो ये जो वेलोसिटी तुम्हारा निकला होगा इक्वल टू क्या किया था, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0. ये जो वेलोसिटी आया गलत नहीं है, ये वेलोसिटी तुम्हारा बॉटम पे आया. अब दूसरी गलती तुम इस मेथड से ये करोगी कि बॉटम पे जो वेलोसिटी होती है, याद रखा है तुमने रूट 5gr, वो अप्लाई करके बैठोगी अभी आगे चल के, क्योंकि वो केस जो था वो थ्रेड वाला था, वही मैं समझा रहा था. रॉड के केस में प्लीज मत अप्लाई करो. ठीक है, एक्सप्लेन अगेन. बाप रे. ओके, आई विल डू इट अगेन. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg into the difference of the height from its initial position and final position. I said that the height difference would be either h minus L or L minus h. इसको ऐसे समझाता हूं तो सबको समझ आ जाएगा. ये है L, ठीक है, और ये है H. एक बार ऐसे समझाता हूं. इमेजिन करिए, व्हेन इट कम्स हियर इट स्टक्स एंड देन इट गोज अप. कहां आके रुकेगा? सो इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस नीचे गया? H
माइनस एल, ठीक है, बिकॉज दिस इज एल. और एक दूसरे तरीके से इस हिसाब से समझो. सो इट गोज डाउन हियर and then it comes back right here. So effectively how much? This is H, this total is L, so this is L minus H. So one diagram is for H minus L, one for L minus H. In either of the two cases the work done will be by gravity only. And what is the work done by gravity? mg H minus L, which is equal to 0, because what is change in kinetic energy? 0. ठीक है. One more question. One more question. चलो. ठीक है. There is a tube. There is a tube and there is a mass which is stuck inside the tube. There is a friction between the mass and the tube. Which has not been given. Achambha. Okay. There is a friction between the tube and the mass which has not been given. Mu is not given. The tube and this mass, they are actually touching each other. So when it falls down, it is rubbing the tube. So friction will do work. Fine. But mu is not given. The question is, find the work done by the force of friction and all other forces acting on the mass. Find the work done by force of friction. या force of friction कर लो से. Find the work done by the force of friction when the mass m stops at the bottom. Stops at the bottom after performing numerous number of oscillation. After performing numerous number of oscillation. एक बार सुन लो ध्यान से इधर. Online students also. This has been supposed given a push here. It just goes down. It might goes here. Maybe not till the top. Friction work कर रहा है. Then again comes down, maybe here, then here, 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 and then. So it just goes down, up, down, up, down, up, down, many number of times, and then finally it stops at the bottom. You have to find the work done. The friction in absence of mu. Mu is not given. ठीक है? Only one request. Please think from the work energy theorem point of view.
This is the last question for today. Tomorrow we are going to do more questions. In the meantime, if anybody has any online question or doubt, please flash it. I'm a little bit free here, 5-10 minutes. I will take care of that. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब peer learning होती है, when one girl or one boy explains other. इससे बेहतर तब लगता है जब लड़ाई होती है. अच्छा तेरे कहने से, अच्छा तुझे बड़ा आता है, and then other one explains, हाँ आता है, आज समझाती हूँ, and then other one say, हाँ यार मैं तो गलती कर रही थी. So this peer learning is important. She started explaining her. Why you remain very quiet? You like this only. चुप रहते हो, बोलते कम हो इनकी तुलना में. ये आपके सब फ्रेंड्स हैं, आप ही बोला करो. See, I have seen that your work is very organized. सब एक साथ लिखते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक साथ. Then you bifurcate them also घर जाके. What are the forces doing work? Frictional force, gravitation, okay, and never say that. Never say that. I will give myself a slap. तुम्हें तो बोल नहीं सकता ना. Never say that, because centripetal force does not do any work. Why? Because normally when a circular motion is taking place, centripetal force happens to be perpendicular to the displacement. Any other force? Normal reaction आ रहा होगा. Normal reaction? No, you are calling it normal reaction. That means it is normal to the displacement, circumference के normal. So neither normal reaction nor centripetal, centrifugal, कुछ नहीं. Frictional will do frictional force and the gravity. Bas that's it. Kinetic energy. ये यहाँ पे आके भी रुक गया, तो फाइनल भी 0 है और फ्रिक्शन तो वैसे भी वर्क करते तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू ग्रेविटी. Very good. So what is the work done by the force of friction? Answer is माइनस कैसे. अच्छा हाँ माइनस, हाँ माइनस आ जाएगा, हाँ क्योंकि फ्रिक्शन नेगेटिव. माइनस एम जी इंटू 2r. पहली बार एक बार में आंसर आया है बच्चों का. हाँ अरे बिल्कुल सही है. क्लैपिंग, तालियां अपने लिए. बट किया कैसे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0. And therefore work done by friction is equal to minus of work done by gravity. Gravity does how many work? How much work? mg into 2r. So minus mg2. that is the answer. ठीक है? Is it okay? Change in kinetic energy is not 2r. Change in kinetic energy is delta k is 0. पहला क्वेश्चन क्या था? Kinetic why change in why kinetic energy becomes 0? Because finally it starts from 0 and it rests at 0 velocity. So what is the change in kinetic energy? 0. mg into 2r. So clap for कुसुम मल्होत्रा मैम के लिए भी clapping. Good. mg into 2r है, वो हो गया, गलती हो गई होगी. You will do another question. Time बचा लिया आपने. Okay, one more question.
Question is, diagram समझ आ गया? If I explain, there is a mass, motion of a car on a banked road. Okay. Who is that? Coastal Guard Public School. I appreciate, sir. I have seen many times you asking question, so I'm very happy. Keep doing that, please. It just give me energy. But the point which you ask, I would like to reply that please give that doubt in written so that the back support team, which comprises of excellent people who are doing a lot of support to the whole Udaan project, they will be able to reply you. Tape recorder की तरह बोल दिया. Okay. So there's a spring constant, 30 Newton per meter. There is a mass which has been attached with a thread, and the one end of the thread is attached with the spring. Okay. The question is, find the extension in the spring. Find the extension in the spring in equilibrium. Find the extension in the spring in equilibrium. That is the question. Same question, children. क्योंकि अब दोबारा क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसी क्वेश्चन का वैसे भी ITJ is known for just changing the data sometimes. So same question can be asked with this diagram. So क्वेश्चन वही है, डायग्राम अलग बना लो. It is given that pulley is massless. बस बहुत जल्दी टाइम आने वाला है जब pulley also become with some mass. Then you will not be allowed to take tension same on both the sides. So find the extension in the spring in equilibrium. I think it's a fifth question, ना? ठीक है, चलो. Okay, sir. Can I? You can drop it in the helpline. They will give you the written solution of this because this needs, ma'am, some doing. The bank track is totally different. Think from work energy theorem. Okay. Chalo. How many forces are doing work here? Which are the forces? Okay, thank God friction is not there. Otherwise you might have been taken that also into account. Change in kinetic energy will also be 0. Good girl. फिर तो करो, फिर तो ये आपका डोमेन है. फिर करके मुझे बताओ आंसर.
understanding? Sure? Good girl. What is the work done for in case of spring? What is the formula? स्प्रिंग के केस में बताया था ना? हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर. अब आपको सोचना होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. मैंने टेबल बनवा के बताया था, याद करो उसके हिसाब से. What is the work done, positive or negative, when the spring goes from natural to elongated? स्प्रिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव होगा. नहीं, ऑलवेज नहीं होगा. elongated to natural positive. I am saying work done by the spring force. Elongated to natural positive. Compressions to natural positive. Natural to compression negative. Natural to natural 0. कब तक आ जाना चाहिए था आंसर? चलो अब कंपटीशन करते हैं. जिन बच्चों का ऑनलाइन आ जाए जरा फ्लैश करो, इनको पता लगे कि हाँ यही नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं. इफ एनीबडी डज दिस ऑनलाइन प्लीज फ्लैश इट, शो देम द मिरर. इतने ढीठ है इन्हें फर्क ही नहीं. हाँ बेटा, 2/3 इस केस में या इस केस में? फर्स्ट वाले केस में. दोनों में अलग अलग आंसर आएगा. पहले वाले केस में x इज इक्वल टू 2/3 मीटर. Okay, I reserve my case here. और लोग भी ट्राई कर रहे हैं. 8/3 तो दो अलग अलग आंसर. This triangle is fixed, it is not moving. -4/3 be the answer. 1/3 भी आंसर है मिस कुसुम मल्होत्रा. 1/3. Is it for the first case, Kusum ma'am, or the second case? And sir, extension cannot be negative, so please check it out again. Extension will be always positive, so check it out again. Avasthi sir, check it out. by 20, 8/3, इधर भी दो, 15 people, 15 answer. What is going on? So that's all. अभी घंटी बज जाएगी छुट्टी होने की, बेल बजा देंगे सर कि बस, तो इसलिए मैं करता हूँ. 1 मिनट, चलो 1 मिनट ले लो. टू बाई थ्री तो इन्होंने भी निकाला है. 8/3 आया था पहले, आप ही का आया था 8/3. अच्छा चलो, 2/3 कई सारे लोग हो गए. 2/3 वो अच्छा 1/3 था मैम का. Forget about the answer. Let's take interest in the mechanism, process. ठीक है. Work energy theorem says that work done by all the forces equal to change in kinetic energy. How many forces are doing work here? Gravity and a spring force. A spring force does positive or negative work here? Negative work. Gravity does positive or negative work here? Positive. सोच लो फिर से दो. Positive because mass is going down. एक और बात जो सबसे जरूरी, if this goes down by an amount x, how much this spring will be elongated? अकाउंट किया था
सच बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी. भूल तो नहीं गए थे? ठीक है, गुड. दैट मीन्स लर्निंग इज टेकिंग प्लेस. इफ दिस गोज, इफ स्प्रिंग इज elongated by x, then how much this goes down? x by 2. तो लॉजिकली क्या सही होगा? वैसे दोनों सही है. मैं इसका x ले लूं, निकालना क्या है हमें यहां पर? तो गलती ना हो जाए एग्जाम में, हड़बड़ी में जो सबसे होती है, इसको x ले लेते हैं ताकि चार ऑप्शन में से ऑप्शन जो हमारा है वही हो, जल्दी से आगे बढ़ जाए. ठीक है, अगर मैं इसको x ले लूंगा, इसको क्या लेना होगा? x by 2. सो m g x by 2, ठीक है, माइनस हाफ k x स्क्वायर, गॉट इट? वर्क डन इज इक्वल टू ZERO 0. ठीक है, इस तरफ ले जाओ, 2 से 2 कट गया. gx इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, x x कैंसिल, and therefore x is equal to twice g by k. In a way mg by k. वैल्यूज डाल के निकालते रहना, मुझे वैल्यू आंसर में इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, कैन यू डू दिस? आंसर बताओ. सो 2 mg by k. वेरी गुड, गुड गर्ल. व्हाट्स योर नेम? आज परफॉर्मेंस बढ़िया है आपका. 2 mg by k. सब लोग करो और कन्विंस करो अपने आप को. उसके बाद मैं कंफ्यूज करके क्लास छोड़ रहा हूं आपको. इतनी बढ़िया तरीके से कंफ्यूज करूंगा कि कल तक सोच नहीं पाओगे, या सोच पाओगे तो मुझे खुशी होगी कि आखिर ये जो मेथड है जो मैं बताने वाला हूं वो गलत क्यों है. ये तो सही है आंसर, बट एक और मेथड बता रहा हूं इसको करने का. लेकिन आपको कल तक मुझे ये बताना सोच के कि वो मेथड गलत क्यों है. यह है सबका. क्या किया होगा आपने? वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड अगेन. तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? मान लो ये x इलोंगेट हुआ, तो ये कितना नीचे आएगा? नहीं, x ही आएगा. ठीक है, उस केस में इस केस में फर्क है. समझ आया? सो mgx माइनस हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसलिए mg2 इज इक्वल टू क्या आ गया? kx. इसलिए x क्या आ गया? 2 mg by k. Now children, tell me one thing. If I go by laws of motion, knowledge of laws of motion, tension and all those forces only, suppose we don't know about the work energy theorem, what is the tension going to be here? T? Tell me, what is tension here? What is tension here? What is tension here? In equilibrium, this T will be equal to mg in equilibrium. Right or wrong? T equal to mg. In equilibrium, this T will be equal to kx. What is the spring force? When a spring is elongated by x, what is the spring force? Kx. So in equilibrium, this T is equal to kx, T equal to mg, mg equal to kx, x equal to, which is half of this result. And this is right answer. That is the wrong answer. My question to all of you and all the online children listening me, that what went wrong in this approach? ITJ देना है, सोचना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चीज गलत नहीं तो आंसर गलत क्यों आ रहा है? इस लॉजिक में कुछ गलत नहीं तो आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? कल के लिए सिर्फ कल तक सोचना है. उसमें आएगा mg by k और आंसर क्या है? 2 mg by k. ठीक है, इज इट ओके? थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच.